Hello friends, let's enjoy the short story written by Rabindranath Tagore. The name of the short story is The Kabuliwala. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear it long, and so my own talk with her is always lively. One morning, for instance, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel, my little Minnie stole into the room and putting her hand into mine, said, "Father, Ramdayal, the doorkeeper, calls a crow a crow. He doesn't know anything, does he?" Before I could explain to her the difference of language in this world, she was embarked on the full tide of another subject. "What do you think, father? Bola says there is an elephant in the clouds, blowing water out of his trunk, and that is why it rains." मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, "बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वो कुछ जानता नहीं ना बाबूजी?" मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। "देखो बाबूजी, बोला कहता है, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है।" "अच्छा बाबूजी, बोला झूठ बोलता है ना?" और फिर वह खेल में लग गई। The window of my room overlooks the road. The child had seated herself at my feet near my table and was playing softly, drumming on her knees. All of a sudden, Minnie left her play and ran to the window, crying, "A Kabuliwala, a Kabuliwala." Sure enough, in the street below was a Kabuliwala passing slowly along. He wore the loose, soiled clothing of his people, with a tall turban. There was a bag on his back, and he carried boxes of grapes in his hand. मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, "काबुली वाले, ओ काबुली वाले!" कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। The Kabuliwala turned and looked up at the child. When she saw this, overcome by terror, she fled to her mother's protection and disappeared. She had a blind belief that inside the bag which the bagman carried, there were perhaps 2 or 3 another children like herself. The peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face. As he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" And I, thinking that Minnie must get rid of her false fear, had her brought out. She stood by my chair and looked at the Kabuliwala and his bag. He offered her nuts and raisins, but she would not be tempted. He and only clung the closer to me.
with all her doubts increased. This was their first meeting. जैसे ही काबुली वाला मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। इसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की जोली के अंदर तलाश करने पर उसे उस जैसे और भी दो चार बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाला ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा दिया। काबुली ने जोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली वाला से उसका यह पहला परिचय था। Not many days later, one morning, I was leaving the house. I was startled to find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great Kabuliwala at her feet. In all her life, it appeared, my small daughter had never found so patient a listener, save her father, and already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, the gift of her visitor. Why did you give her those? I said, and taking out an 8 anna bit, I handed it to him. The man accepted the money without demur and slipped it into his pocket. The Kabuliwala had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. कुछ दिन बाद एक सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाला से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली वाला को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाला से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। लेकिन मैंने जान लिया था कि काबुली वाला और मिनी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। Minnie and Kabuliwala had many quaint jokes which afforded them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in all her tiny dignity, Minnie would ripple her face with laughter and begin, "Oh, Kabuliwala, what have you got in your bag?" And who and the Kabuliwala would reply in the nasal accents of the mountaineer, "An elephant." Not much cause for merriment, perhaps, but how they both enjoyed the fun. And for me, this child's talk with a grown-up man had always in it something strangely fascinating. And for me, this child's talk with a grown-up man had always in it something strangely fascinating. Then the Kabuliwala
not to be uh, not to be behindhand, would take his turn. Well, little one, and when are you going to the father-in-law's house? Now, most small Bengali maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we, being a little new-fangled, had kept these things from our child, and Minnie at this question must have been a trifle bewildered. But she would not show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" इसी तरह काबुलीवाला और मिनी अच्छे फ्रेंड बन गए और वो कभी कभी एक दूसरे से बहुत अच्छे जोक्स भी कहा करते थे, उसका आदान प्रदान भी करते थे। इसी तरह काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बहुत बातें होती और वे खूब हंसते। काबुली वाला, जिसका नाम रहमान था, वो काबुली वाला को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमान से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? दरअसल छोटी बच्ची मिनी को पता नहीं था कि ससुराल क्या है, और हमारी फैमिली में इस तरह की ससुराल वाले की और ससुराल की और ससुर की बातें बच्चों से हम कहा नहीं करते थे कि उसका मतलब क्या होता था। तो मिनी उल्टे वह रहमान से ही पूछ बैठे कि तुम ससुराल कब जाओगे, बिना जाने कि ससुराल का मतलब क्या है। Amongst men of the Kabuliwala's class, however, it is well known that the words father-in-law's house have a double meaning. It is a euphemism for jail, the place where we are well cared for at no expense to ourselves. In this sense, would the sturdy peddler take my daughter's question? Ah, he would say, shaking his fist at an invisible policeman, I will thrash my father-in-law. Hearing this and picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friend would join. काबुलीवाला के वर्ग में ये खूब जाना जाता है कि फादर इन लॉ का मतलब ससुराल का जो मतलब है, वो मानते हैं कि उसका अर्थ ये जेल के लिए सोचते हैं। रहमान अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। जब मिनी ने उससे पूछा रहमान को कि तुम ससुराल कब जाओगे, तब रहमान के ख्याल में ससुर और ससुराल का मतलब था पुलिस स्टेशन, और वो अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती।
Minnie's mother is unfortunately a very timid lady. Whenever she hears a noise in the street or sees people coming towards the house, she always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snakes or tigers or malaria or cockroaches or caterpillars. Even after all these years of experience, she is not able to overcome her terror. So she was full of doubts about the Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. I tried to laugh her fear gently away. मिनी की जो माता थी यानी मेरी पत्नी थी वो स्वभाव से डरपोक थी। कुछ भी आवाज अगर बाहर से आती, मोहल्ले से आती, तो वो जल्दी से दौड़ी चली आती बाहर और उस उस डर से देखती कि कहीं चोर तो नहीं है, कहीं कोई आ, कोई कोई बेवड़ा या कोई कुछ प्राणी, कोई सांप या टाइगर्स या कुछ मलेरिया, कॉकरोचेस या कुछ जीव जंतु है। ऐसे छोटी छोटी बातों से वो डरती। और वो जब काबुली वाला को देखती तो उसे लगता कि ये बच्चों को किडनैप करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं उठाकर। तो मुझे बार बार कहती कि आप देखते रहना, काबुली वाला आए तो आप देखते रहना, अपनी निगाहें उस पर रखना। और मैं भी हंसकर उसका जो डर था वो निकालने की कोशिश कर रहा था। Once a year in the middle of January, Rahman the Kabuliwala was in the habit of returning to his country, and as the time approached, he would be very busy going from house to house collecting his debts. One morning, a few days before he had made up his mind to go, I was correcting my proof sheets in my study. It was a chilly weather. Through the window, the rays of the sun touched my feet, and the slight warmth was very welcome. It was almost 8 o'clock, and the early pedestrians were returning home with their heads covered. All at once I heard an uproar in the street, and looking out, saw Rahman being led away bound between two policemen, and behind them a crowd of curious boys. There were blood stains on the clothes of the Kabuliwala, and one of the policemen carried a knife. Hurrying out, I stopped them and inquired what it all meant. Partly from one, partly from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it, and that in the course of the quarrel, Rahman had struck him. Now, in the heat of his excitement, the prisoner began calling his enemy all sorts of names, when suddenly in a veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, "Oh, Kabuliwala, Kabuliwala!" Rahman's face lighted up as he turned to her. She at once therefore proceeded to the next question. "Are you going to the father-in-law's house?" Rahman laughed and said, "Just where I am going, little one." Then, seeing that the reply did not amuse the child, he held up his fatted hands. "Ah, I would have thrashed that old father-in-law,
but my hands are bound on a charge of murderous assault. Rahman was sentenced to some years imprisonment. एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमान को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमान के कुर्ते पर खून के दाग है और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। कुछ सिपाही से और कुछ रहमान के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमान से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली वाला ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमान का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूं। रहमान को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने अपना गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। ये इस तरह छुरा चलाने के अपराध में रहमान को कई साल की सजा हो गई। टाइम passed away and he was not remembered. Many years had passed away. It was once more autumn, and we had made arrangements for our Mini's marriage. It was to take place during the Puja holidays, with Durga returning to Kailas. The light of our home always was to depart to her husband's house and leave her father's in the shadow. I was sitting in my study, looking through the accounts, when someone entered, saluting respectfully, and stood before me. It was Rahman, the Kabuliwala. At first, I did not recognize him. He had no bag, nor the long hair, nor the same vigor that he used to have, but he smiled, and I knew him again. वैसे तो ये काबुली वाले हर साल सर्दियों के अंत में अपने देश चले जाते हैं। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगे रहते हैं। उसे घर घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार ये काबुली वाला मिल जाता। लेकिन इस बार वो जेल में था और अभी बहुत साल बीत चुके। छुरा चलाने के अपराध में रहमान को कई साल की सजा भी हुई। काबुली वाला का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में कोई मेरे कमरे में आया। वो रहमान था, काबुली वाला। रहमान सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका।
उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमान है। मैंने पूछा, क्यों रहमान, कब आए? When did you come, Rahman? Rahman said, last evening I was released from jail. The words struck harsh upon my ears. I had never before talked with one who had wounded his fellow, and my heart shrank within itself when I realized this, for I felt that the day would have been better omened had he not turned up. There are ceremonies going on, I said, and I am busy. Could you perhaps come another day? At once he turned to go, but as he reached the door, he hesitated and said, may I not see the little one, sir, for a moment? It was his belief that Minnie was still the same. He had pictured her running to him as she used, calling, "Oh, Kabuliwala, Kabuliwala." He had imagined too that they would laugh and talk together just as of old. In fact, in memory of former days, he had brought, carefully wrapped up in paper, a few almonds and raisins and grapes, obtained somehow from a countryman, for his own little fund was dispersed. जब मैंने रहमान से पूछा, तुम कब आए, तो उसने बताया, कल ही शाम को जेल से छूटा हूं। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूं, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास हो वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुक कर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी है, वैसी ही बच्ची बनी हुई है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। वो मिनी, उस दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी, इस तरह ये शायद सोचता था। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था। यह थोड़ा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। ये काबुली वाला यही सोचता था कि अभी तक यही सोचता था कि मिनी वो 5 साल की छोटी बच्ची है। वैसे तो कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब ये कुछ अपने बिरादरी के दोस्त से मांग कर कुछ मेवा मिनी के लिए लाया था। अ, और वो देने लगा मुझे। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब। I said again, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone today. The man's face fell. He looked wistfully at me for a moment, then said, sir, then went out. I felt a little sorry and would have called him back, but I found he was returning of his own accord. He came close up to me, holding out his offerings with the words, I brought these few things, sir, for the little one.
Will you give them to her? I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, "You are very kind, sir. Keep me in your recollection. Do not offer me money. You have a little girl. I too have one, Parbati. Parbati, like her in my own home. I think of her and bring fruits to your child, not to make a profit for myself." तो जब मैंने उसे पैसे देने चाहे वो किशमिश और मेवा के लिए जो वो लाया था मिनी के लिए, तो उसने कहा, "आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए।" फिर जरा ठहर कर बोला, "आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, उसका नाम परबती है। मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता." Saying this, he put his hand inside his big loose robe and brought out a small and dirty piece of paper. With great care, he unfolded this and smoothed it out with both hands on my table. It bore the impression of a little hand, not a photograph, not a drawing, the impression of an ink-smeared hand laid flat on the paper. This touch of his own little daughter had been always on his heart, as he had come year after year to Calcutta to sell his wares in the streets. Tears came to my eyes. I forgot that he was a poor Kabuli fruit seller while I was, but no, what was I more than he? He also was a father. That impression of the hand of his little Parbati in her distant mountain home reminded me of my own little Minnie. I sent for Minnie immediately from the inner apartment. Many difficulties were raised, but I would not listen. Clad in the red silk of her wedding day, with the sandal paste on her forehead, and adorned as a young bride, Minnie came and stood bashfully before me. रहमान ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसी की छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमान हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता था। इस कागज को और उसके पर रही ये छाप को देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने और चंदन का लेप उसके माथे पे लगाए।
मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। The Kabuliwala looked a little staggered at the apparition. He could not revive their old friendship. At last he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" But Minnie now understood the meaning of the word father-in-law, and she could not reply to him as of old. She flushed up at the equation and stood before him with her bride-like face turned down. I remembered the day when the Kabuliwala and my Mini had first met, and I felt sad. When she had gone, Rahman heaved a deep sigh and sat down on the floor. The idea had suddenly come to him that his daughter Parbati too must have grown in this long time, and that he would have to make friends with her anew. Assuredly he would not find her as he used to know her, and besides, what might to have happened to her in these 8 years? I took out a bank note and gave it to him, saying, "Go back to your own daughter, Rahman, in your own country, and may the happiness of your meeting bring good fortune to my child." मिनी को इतनी बड़ी और इस पोशाक में, शादी वाले पोशाक में देखकर रहमान काबुली वाला पहले तो आ, सक पका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, "बच्ची, सास के घर जा रहे हैं क्या?" मिनी अब ससुराल का अर्थ समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमान जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी, उसकी बेटी परबती भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, "रहमान, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ और अपनी बेटी को खुश देखकर शायद शायद मेरी बच्ची की भी किस्मत खुल जाए और वो भी हमेशा खुश रहें।" रविंद्रनाथ टैगोर की ये कहानी द काबुली वाला बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली है। चलिए अब ये कहानी के संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं उसको उसकी चर्चा करते हैं। Now let us discuss short questions of this story in English. Why was Minnie afraid of the Kabuliwala's bag? Minnie was
afraid of the Kabuliwala's bag because she believed that in the bag of Kabuliwala there were two or three children like her, and Kabuliwala would be a kidnapper. Minnie rushed to the window on seeing an Afghan Kabuliwala dressed in a loose, soiled clothing and a tall turban. He carried a large bag on his back. On hearing her call out to him, he looked back. Minnie was terrified by this as she believed that little children were taken away in the large bag. Okay, second question. Once Minnie and Kabuliwala made friends, what common jokes did they share? Kabuliwala and Minnie became great friends. They exchanged quaint jokes. The Kabuliwala would ask, "Well, little one, and when are you going to the father-in-law's house?" For a child like Minnie, this was an odd question. So Minnie asked Kabuliwala back, "Are you going there?" Among the men of Kabuliwala's class, the words father-in-law's house meant a jail, a prison. The Kabuliwala would say, "I will thrash my father-in-law." Okay, now third question. Why did Minnie's mother oppose the friendship of Minnie and the Kabuliwala? Minnie and the Kabuliwala enjoyed the company of each other. They became great friends. Minnie's mother was a timid lady. She had heard about the kidnapping of children. She had doubts about the Kabuliwala, but the author, the narrator, removed her fears. Right? The author of four. Why was the Kabuliwala sent to jail? A neighbor of the author had purchased a Rampuri shawl from the Kabuliwala. Now the Rahman, the Kabuliwala, demanded money. The neighbor said that he had not purchased the shawl. There was a quarrel. Then Rahman struck him with a knife. As a result, he was arrested by police and sent him to jail. And he was imprisoned for 8 years. Okay, question number 5. What did the Kabuliwala carry with him to remember his daughter? Rahman the Kabuliwala had the daughter named Parbati. Whenever the Kabuliwala saw Minnie, he was reminded his own little girl. So the Kabuliwala carried a piece of paper with the impression of an ink smeared hands of his daughter Parbati. Thank you very much.